Priyanka Tibrewal of West Bengal BJP with us on the phone line. Priyanka, give us a sense of what is happening there, as we understand that Sukanta is trying to penetrate further and cross the barricades to really meet with the people, but he's claiming that the police is pressurizing them and not allowing them to move forward. You tell me that these Hindus and our people who are there in the procession, they were attacked so badly. Thereafter, is it wrong to go and visit them? Is it wrong to go and tell them that we are there with you? We are there to support you. We are there to protect you. But they are stopping us. A vindictive chief minister, she says, and she clearly mentions that the procession should not go to the Muslim areas. Please avoid passing from the Muslim areas. Now, what does that mean? Saying in India, in a democracy, nowhere in the constitution is it mentioned that, these areas should be Islamic areas or Muslim areas or Hindu areas. How dare a chief minister say that? It's a clear indication that this rift has been created by the sitting chief minister of West Bengal, which is Mamata Banerjee. She is trying to create this rift between Hindu and Muslims just for her vote bank rajniti, vote bank politics. This hatred is penetrated deep now because Priyanka, the reason behind this is Mamata Banerjee. But these are very serious allegations coming in from the BJP, and quite an escalation we see on that front, where they're stating that there is video proof of how the cops are also very much a part of it. There was stone pelting, and that too in front of the police, and they chose not to do anything. And every attempt is being made to stop and block the BJP. This vindictive chief minister did not ask police to take any action. She was enjoying her fate when these people were, attacked, when stones were pelted on the 70% Hindus of West Bengal, because she doesn't care for the Hindus. She doesn't care for the Bengali Hindus. Her only support is towards the 30% minority. Half of them are Bangladeshis who give her votes. She only cares for them. And I'm telling you very, very specifically, in very clear statements, I am not trying to wrap up my words. In very clear words, I'm telling you that she only cares for the minority who vote for her. And now all the more because after the by-elections of Sagar Dighi, she has seen that the Muslims did not vote for Trinamool. So in all her way out, she's going to show them her support. And she doesn't care if Hindus are killed in this. All right. All right, Priyanka Tibrewal there making her point very clear, as the face-off between the BJP and TMC continuing in the state of West Bengal, and BJP also stating that the police is working at the behest of the TMC. We leave it at that. We have to slip into a very short commercial break, but we'll be back on the other side to get the very latest from West Bengal. And there is a huge storm over the insult to Savarkar, as demand is growing for Rahul's apology. Also, it is an all-out chaos in Congress, cadres fighting for tickets in battleground Karnataka. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. He's been arrested. Because it was a case, I believe, that was closed by the police itself. They're trying to stop us. NIA की टीम बाजे को लेकर यहाँ पहुंची है क्योंकि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे इसी नतीजे 200 to 300 supporters are gathered here at Hooghly. They're trying to stop. Today the whole nation is looking at you. What exactly are your thoughts? Why must
रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde who is being present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press conference that was called in by Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief. रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। Very good afternoon. You're watching Republic TV with me, Rakshita Mishra. Let's get you started with all the top stories making headlines at this hour. Prime Minister hits out at the opposition, says dynasty and corruption goes hand in hand. Storm over insult to India's freedom icon Savarkar. Demand grows for Rahul Gandhi's apology. Even ally NCP dumps the Congress over Savarkar insult. CPI now comes to support. Mega face-off in Bihar Assembly as Nalanda and Sasaram violence becomes the top focus. Fresh violence in West Bengal's Hooghly Section 144 in force. Internet services suspended. And all-out chaos in Vadra. Congress as cadres fight for tickets in battleground Karnataka. All right, waging a war on corruption, Prime Minister Modi has now sent out a clear message saying that previous governments have allowed the corrupt to thrive, further adding that dynasty and corruption goes hand in hand. भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में
इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। All right, that was a strong message coming in from Prime Minister Narendra Modi, and I'm told that I've been joined by a BJP spokesperson, Shahzad Poonawala, on this story. Shahzad, this is a clear message by the Prime Minister, targeting, just as he targets the Congress party, the opposition over corruption. He's also really outlining the key responsibilities of the central agencies, and this, of course, given the fact how the opposition has targeted the government over the what they call the misuse of central agencies. What do you have to say on this? You know, under the UPA, ED stood for entitled diners. That means the ED should do no action on entitled diners, and CBI was clean chit Bureau of Investigation. That means everyone would be given clean chit as per the political convenience of Congress. It was called a cage parrot in 2013. For the last 9 years, ED and CBI today are independent to pursue corruption cases against anybody, however high and mighty they may be, and they stand the test of courts. The courts have never called them agencies that are being misused. The courts have upheld the cases against all of these people of corruption, the alliance of corruption, the Gadbandhan of corruption, and therefore these people today have united. All of them have united because they are common in corruption and common ambition, and they want to try and obstruct the mission of the CBI. The fact of the matter is that if you are so innocent, why is your ecosystem trying to defame ED and CBI? You should go to court and get relief. You should go to court and prove they are acting in a vendetta manner. And look at the hypocrisy. Congress will say action on Manish Sisodia, very good. Action on Satyendra Jain, very good. Action on Sonia Gandhi, very bad. And Rahul Gandhi, very bad. So this kind of double standards cannot be tolerated, and the ecosystem is trying very hard to besmirch the good name of ED, CBI, but the alliance of corruption can't work against the alliance of conviction. All right. Thank you so much, Shahzad Poonawala, for joining us over this story. And viewers, we are also getting reactions from the Congress party. Mr. Lokesh Jindal of the Congress party is joining us on the phone line. Mr. Jindal, we've seen this new video that has been tweeted by the BJP, and now it's the Prime Minister himself who has given out a very stern and a clear message to the CBI and also the opposition. How do you react to this? Almost all institutions, whether it is the CBI, whether it is Central Information Commissioner, Vigilance Commissioner, Right to Information Act, all these forms of public grievance, redressal, investigative agencies were established in the previous regimes. I do not understand on what basis the Prime Minister is accusing that everything corrupt was taking place in the previous regimes. How can he ignore that all the basic establishment, institutional framework was set up during the previous regimes, and during the previous regimes it was never the manner in which these institutions are being misused presently. Presently, almost all institutions, they are working at the behest of the central government and serving its political purposes. They are being patted. If all their decisions are in line to the political ends of the ruling political party, and previously if they were termed as caged parrots, I would say now they have turned into a very... All right. Thank you so much, Mr. Lokesh. I'll have to cut you out there because we are going straight across to what Mamata Banerjee has to say. She is addressing the public briefing right now. শুভ শান্তির আলো জাগ্রত করুক। কি আমার সবুজ সাথীর ভাই বোনেরা, সাইকেলে করে যখন যান
তখন মনে হয় না এটা শান্তির প্রতীক, এটা স্বস্তির প্রতীক, এটা এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক। কোথায় সবুজ সাথী ভাই বোনেরা আমার, শিক্ষাশ্রীর ভাই বোনেরা আমার, আমার মেধাশ্রী ভাই বোনেরা, আমার কন্যাশ্রী যে আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনারা কোথায় একটু হাত তুলুন তো, আমি দেখতে চাই আপনাদেরও। পারবেন না আপনারা? কি ছাত্র পারবেন না? ছাত্রীদের সাথে হাতে মিলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন না? ভাই বোনেরা কাছে দোয়া করে দাঙ্গাবাজদের খতম করতে পারবেন না? কি আমার জয় Can you not stop the rioters? She's asking the students, can you not all unite and stop the rioters? I have done everything for you. A few people took money from BJP and they're breaking the roads. কত টাকা লাগে বলুন তো? Do they know that how much money is required to make a road? We make and they break. জেনে রাখুন, একটা আইন I'm telling clearly, whoever is breaking roads or vandalizing, সরকারি বা প্রাইভেটে, তাহলে আপনার জমি law will take care of them. নিলামে নিয়ে নেবে এবং নিলামে বিক্রি করে দেবে। সেই টাকা your properties will be taken by the government and then it will be sold off, and that's how we will recover the money. মনে রাখবেন, কই আমার মৎস্যজীবী ভাই বোনেরা, আমার কেউ মরে গেলে কৃষক 2 লক্ষ টাকা করে দিই। When someone dies, I give 2 lakh rupees to them in my state. If someone dies of any accident or some incident. আমরা তাদের বডি নিয়ে এসেছি এবং তাদের প্রতি পরিবারকে আমরা 2 লক্ষ টাকা করে দিয়েছি। 2 people got burnt and died. I gave 2 lakh rupees to each of them, to their family. কোনো বিপদে পড়েন, একটা অ্যাপ আছে, তার নাম হচ্ছে আপন বাংলা। আপন বাংলা, app called Apon Bangla app. You click on that and you let us know your problems and we will help you, even people who are residing outside the state. সারা বাংলা থেকে শুরু করে আমরা throughout India and Bengal, শুরু করে আমার বাউল থেকে শুরু করে আমার ধামসা মাদল থেকে শুরু করে আমার ঢোল থেকে শুরু করে আমার কীর্তনিয়া থেকে শুরু করে আমি ছাত্র যুবককে বলছি, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। Don't be scared. মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ের কাজ এখানে হবে, ওদিকে তাজপুরে হবে, দীঘাতে আজকে ট্যুরিজম কি হয়ে গেছে, and we will stop any violence. ট্যুরিজম পার্ক হচ্ছে, and we have made so many projects like ecotourism park, দীঘাতেও হচ্ছে, কোলাঘাটাও হচ্ছে, তমলুকেও হচ্ছে, Hooghly, Kolaghat, all these areas we are making developmental projects. এগুলাতেও হচ্ছে। চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই। You don't have to worry. You trust your Didi. Trust your Didi. She's talking about herself. আপনারা আমাকে ভালোবাসেন? Do you love me? আপনাদের দোয়া আছে আমার উপর। একটু জোরে Your বলতে হবে। blessings are with me. Can you say loudly? ছাত্রছাত্রীরা জোরে বলুন। Students, please say loudly. আপনারা যদি আমাকে 1% দেন, আমি আপনাদের জন্য 100%, if you give me 1%, I'll give you 100%. My whole life জন্য তৈরি। I will protect you, even giving up my life. মানুষের সুরক্ষা। Remember that Didi's Suraksha Kavach is people's Suraksha এবং Kavach. চলতে চাই বলেই আগামী 2 দিন আমি দীঘায় থাকবো। কেন থাকবো? Next 2 days I'll stay in Digha. কাজ দেখতে এসেছি। I'll be overlooking the Jagannath Temple project in Digha. করতে এসেছি। আমি 7 কিলোমিটার ব্রিজ দীঘায় করে দিয়েছি, সেটা দেখতে I have made 7 kilometers of bridges in Digha. তাই 2 দিন আমি দীঘায় থাকবো, এগুলো I'll stay 2 days here and I'll take care of all the projects. তারপর আমি 6 তারিখে ফিরে যাব। তার মধ্যে 6th I'll return. যারা আছেন এখানে বা অন্যান্যরা সকল হোম সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ডিজি থেকে শুরু করে এডিজি থেকে শুরু করে DG and everyone present here, ADG, এসপি থেকে শুরু করে ডিএম থেকে শুরু করে সবাই DM and everyone who are present, I tell everyone, use আমার the volunteers, যারা গ্রিন পুলিশ তাদের কাজে লাগান, use the civic volunteers and green police, আগে আমাদের সাথে কাজ করতো তাদের কাজে লাগান, even use the tribal youth. সিভিক পুলিশ ভাই বোনেরাও জেনে রেখো, আগামী তোমাদের আস্তে আস্তে I'll tell the civic police, in future you will get a lot of responsibilities. I have made quota for you. You will become constables. আর আগে নিয়ম ছিল না
সিভিক পুলিশের কেউ মারা গেলে তার পরিবার চাকরি পাবে, সেটাও আমরা করে দিয়েছি। এটা previously the family members of a civic police didn't get any job if the civic police died, but now we changed the law. মানুষের সরকার This সবার is জন্য the government of Mamata Manush. কন্যাশ্রীর দরকার, We need Konnashri. সরকার শিক্ষাশ্রীর দরকার, মানুষ We need Shikhashri project. She's talking about all her developmental projects. ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের সংসার, লক্ষ্মী ভান্ডারের দরকার, মা লক্ষ্মী Bhandar is needed in our এবং আমাদের টুরু থেকে state. শুরু করে Lokhi Bhandar is our project where she provides money to the woman. দাঁড়াবার জন্য সরকার। মায়েদের মুখ দেখলে আমার মনে হয় ওই তো আমার মা লক্ষ্মীরা আসছে, If I see the woman, I feel that Lakshmi Devi is present. আসছে, ওই তো আমার মুরমুরা আসছে, ওই তো আমার আদিবাসীরা আসছে, ওই তো All the Adivasis, Tudus and Murmus, when I see them, I become happy. I love all of them. আপনারা যে ফসল ফলান আমরা সেটা কিনে নিই, আমরা কিনে নেব। The farmers, whatever you produce, we buy from the government. মনে রাখবেন, We buy your potatoes, we buy all the crop that you produce. কেন্দ্রীয় সরকার You don't have to worry when my government is here. কেউ কেউ কালকে লিখেছে ওই জন্য ওই টাকা দিয়েছে, ওটা নয়, ওটা আলাদা। এখন জিএসটি একটাই ট্যাক্স, দিল্লি তুলে নিয়ে যায় বাংলা থেকে। The central government is taking away all the money from here in the form of GST. রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেও জিএসটি ট্যাক্স নেয়। Even when we go to eat in restaurants, we have to pay GST, but we are not getting back the money from Delhi. আমাদের প্রাপ্য আমরা যাতে পেতে পারি সেটা জিএসটিতে বলা আছে, কিন্তু এরা সব বন্ধ করে দিয়েছে। The central government has stopped all the money that I could use for projects. 100 দিনের গরিব মানুষ কাজ করেছে। Even the 100 days work, they have stopped the money. বেঈমান, লুটেরা, দাঙ্গাবাজ, They are looterers, they are dacoits, they are rioters. The central government, BJP government are rioters. বাড়ি তৈরি করে, জমির ধান কাটে, মেয়েরা মাথায় poor people, মাথায় করে they make houses, they produce crops. The women make houses in 100 days work and they have stopped their money. বাংলার বাড়ি তার টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। We had a project called Banglar Bari, Bangla's house. They even stopped that money. এই যে 12,000 কিলোমিটার রাস্তা করছি, এই টাকাটা মনে রাখবেন আমাদের টাকা, দিল্লির টাকা। The 12,000 kilometer road project that we are making, this is our money. They are not providing any money. এটা রাজ্য সরকারের টাকা, রাজ্য সরকার। This is the state government's money, not the Delhi government's money. আপনাদের মিথ্যে বোঝানো হচ্ছে। They are lying to you all, the central government. যারা 100 দিনের কাজ করতেন তারা কাজ করবে। তাহলে দিল্লি তুমি আমাকে ভাতে মারার চেষ্টা করলো, আমি তোমায় মারতে দেব না। If Delhi government, you try to stop our food, then I will not let you alone. বিজেপির কাছে মাথা বিক্রি করব না। I will not sell myself to BJP. এটা জেনে রেখে I will not sell myself to CPIM. বাংলার বাড়ি 2024 এ ওদের ইলেকশন আছে। 2024 there are elections. না দিয়েও রেখে No দিতে one পারে। get into that trap. আস্তে আস্তে ব্যবস্থা করব কোথা থেকে কিভাবে ইনকাম করে আমরা করতে পারি। We are slowly trying to make the projects. We are trying to earn money. 100 দিনের Don't have to worry. ইতিমধ্যেই আমরা প্রায় 40 লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের আমরা কাজ In 100 days work, we have provided money to about 40 lakh job card holders. আমরা 5 বছর পর পর 100 দিনের কাজে, রাস্তার কাজে We have been the number one state in 100 days work for a long time. And they have stopped our money because we are not doing BJP. ওরা অডিট দেয়নি, ওরা ঠিকমতো করেনি, চুরি করেছে, তাই দিচ্ছে। And they are saying that we didn't work properly. I am challenging them. রাজ্যের কাছে পেন্ডিং নেই, কোনো কিছু রাজ্যের বিরুদ্ধে No work is pending here in West Bengal. 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে বাংলায়। They have sent 160 central teams in Bengal. ভালো মন্দ They have stayed in 5-star hotels, eaten, and then caused riots. বাড়ি ফিরে গেছে। And they have done meetings and then went home. 100 দিনের টাকা কোথায় আগে দাও? Where is the 100 days money? Give me the money. And then we come for making riots in Bengal. First give us the money, then come for us. কৈফিয়ত দাও, কেন রাস্তা করে দাওনি? রাজ্য সরকার তো করছে।
Answer me, why didn't you make the roads the state government is making? লক্ষ্মীর ভান্ডার আমাদের টাকা দিয়ে আমরা করি, তপশিলি বন্ধু আমাদের টাকা দিয়ে করি, আমরা doing our projects on our own money like Lakshmi Bhandar. মেধাশ্রী আমাদের টাকা দিয়ে করি, সংখ্যালঘু লোন Medhasri we are doing কন্যাশ্রী আমাদের with our own money. Konyasri we are doing with our own money. যুবশ্রী থেকে শুরু করে Shikhasri, Jubosri, all her projects. She is naming all her projects and she is saying that she did all these with her own money. কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে কাজেই I helped the poor farmers with my own money. আপনারাও করবেন, 1 year আমিও করব, we will be struggling. You also struggle, I will also struggle. করব না, আমি But I will not stop your food. আমি I will not stop your clothes. করব না, আমি আপনাদের I will not stop your education. করব না, আমি ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করব না, আমি I won't খাবারের stop জল your বন্ধ credit card. করব না, আমি রাস্তা তৈরি করা বন্ধ করব না, 100 দিনের I will not কাজও stop যাতে making 50 roads. দিন অন্তত বাংলার Even the 100 days তার work, I ব্যবস্থা will not করে দেবো। stop. এটা মনে রাখবেন, সবার জন্য করব, কিন্তু I'll do for everyone. নির্বাচনে আর 2024-এ মনে রাখবেন এই দাঙ্গাবাজরা যারা ঘর But Panchayat election and 2024 election, don't give your votes to the rioters. Don't give your vote to the ones who are burning your houses. বাড়ি ভাঙতে যায়, We make roads, they break roads. We make houses, they break houses. নাচ করছে, এদের আপনারা সমর্থন করবেন? এটা You will support these people who are doing the riots. এটা পৃথিবীর সংস্কৃতি, এটা বিশ্ব সংস্কৃতি। This is the culture of Bengal and the world. What they are doing. যদি আমাকে ভালোবাসেন, আমার একান্ত Remember, আমার কন্যাশ্রী if you love me, কাছে, আমার যুবকদের কাছে, আমার and if you love all the people of West Bengal, বন্ধুদের কাছে, আমার মা বোনদের কাছে, আমার I সংখ্যালঘুদের have a কাছে, request আমার to all তপশিলি the বন্ধুদের কাছে, women, আমার আদিবাসী farmers, বন্ধুদের কাছে, আমার Adivasis, শ্রমিক backward, বন্ধুদের কাছে, OBCs, সবাইকে বলবো, students, দয়া করে workers. বিজেপি I have requests for everyone. করবেন না, Please don't support BJP. Please don't support their riots. সেটা আমরা ভেঙে With দিয়েছি, folded hands, I am requesting. Don't support them. I have exposed all of them. My request is to not support them. They will run away from Bengal. They will escape from Bengal. But you don't support them. আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে বলবো, I will thank all of you, but I'll say সরকারি প্রোগ্রাম, তাই জাতীয় Janagono Mano government program. আমার ছাত্রছাত্রীদের হাতে মাইকগুলো দিয়ে দাও, Give mics to all the students. লাইন করব, তারপর I will sing one line Janagono. আমার সবুজ সাথী, আমার সবুজশ্রী, আমার Then শিক্ষাশ্রী, my আমার students, ঐক্যশ্রী, আমার young মেধাশ্রী, girls, young boys, আমার লক্ষ্মীর ভান্ডার, আমার কৃষক বন্ধু, women, সবাই জাতীয় farmers, সঙ্গীত গেয়ে আমরা যারা all দেশের of them জন্য will লড়াই sing the করেছে, national anthem. স্বাধীনতা সংগ্রামের জেলা, And নন্দীগ্রামের this is like a শহীদদের fight of জেলা, independence. খেজুরির অত্যাচারের জেলা, আমরা দেশকে সম্মান This is জানাবো। the district of Nandigram. And we will. All right. Right, that was Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, attacking the BJP over the riots in Howrah and Hooghly. She has reiterated her charge of the BJP funding the riots, the violence reported for days since Ram Navami, and is also saying yet again that the BJP and the people, BJP has instigated violence. She has also blamed the people who were part of the Ram Navami procession, have deliberately entered what she calls the minority areas. That's it right now on this bulletin. We'll be back with lots more on that story. Mega face-off in Bihar Assembly as Nalanda and Sasaram violence becomes the top focus. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The
BJP Shiv Sena. Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde, who is being present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press conference that was called in by Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, clearly condemning the statement of Rahul Gandhi, and there they have announced that there will be a Savarkar Gaurav Yatra across Maharashtra. So it has been started from today. It will go on till 8th of April. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. On there it is. He's been arrested. रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। All right, we're getting in some breaking news from West Bengal. We are in fact getting visuals from Bengal's Siliguri, where a suspected crude bomb has been found in Siliguri's Kavahari area. The bomb squad is at the spot. The officials are trying to defuse the bomb. They're preparing to defuse the bomb, but those are the latest fresh visuals coming in from Siliguri. A suspected crude bomb has been found in West Bengal, Siliguri, and what we are learning as of now is that officials, the bomb squad is at the location. Bomb squad is at the location in Siliguri, and they are preparing to defuse the bomb that has been found. Security forces have foiled a Pakistani attempt of pushing weapons into the Indian territory. This time in the Vijaypur area of the Samba district, Pakistani drone tried to drop a consignment, the information of which was picked up by the Samba police, and soon the senior officials along with the bomb disposal squad reached the spot. Important to mention that so far 3 pistols along with hand grenades have been recovered by the Jammu and Kashmir police, and this seems to be another nefarious plan of terror group Lashkar-e-Toiba, which is into the trade of pushing narcotics as well as weapons. In Punjab, they are on to pushing narcotics so that the proceeds of sale can be used to fuel terrorism, and in Jammu and Kashmir they are pushing pistols as well as hand grenades into the Indian territory so that civilian killings as well as the target on the public places can be carried out by the handlers. Now the police is collecting the temp data of the area to find out who was the possible person to pick this consignment. With Sarjeevan Kumar, Gursimran Singh for Republic Media Network. Right now, but lots more on the other side. Prime Minister has hit out at the opposition, saying that dynasty and corruption goes hand in hand. All that and lots more on the other side. Stay tuned. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. On there it is. He's been arrested. Because it was a case, I believe, that was closed by the police itself. They're trying to stop us. NIA की टीम बाजे को लेकर यहाँ पहुंची है क्योंकि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे इसी 200 to 300 supporters are gathered here at Hooghly. They're trying to stop the car. Today the whole nation is looking at you. What exactly are your thoughts? Why must
रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde, who has been present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press conference that was called in by Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, clearly condemning the statement of Rahul Gandhi, and there they have announced that there will be a Savarkar Gaurav Yatra. Right, as supporters of influential Shiite cleric Muqtada al-Sadr took to the streets of Baghdad on Sunday to reaffirm their rejection of any kind of normalization with Israel. Here's a report. Hundreds of Iraqis took to the streets of Baghdad to reaffirm their rejection of any kinds of normalization with Israel. Supporters of influential Shiite cleric Muqtada al-Sadr were present in large numbers at the protest, carrying the leader's posters and hurling slogans. The protesters also burned the Israeli flag to show their strong opposition to the Iraq-Israel relations. Last year, the Iraqi lawmakers passed a bill criminalizing normalization of ties and any relations, including business ties, with Israel. उनका फुटेज, और हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले शागरदिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था, और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं 30% ভোট के लिए দুধেল গাই, বাংলায় বলে দুধেল গাইয়েদের খুশি রাখতে গেলে তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন, এবং দুধেল গাইদের জন্য उन्होंने फ्री हैंड उनको दे दिया था। जिस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा के उस दिन ममता बनर्जी पूरा जो फोकस रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, उस दिन धरना मंच उन्होंने प्री प्लान्ड वे में धरना मंच में उन्होंने वो थी, और वहाँ से उन्होंने पूरा अटेंशन जो था मीडिया का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सब मीडिया लोग धरना मंच के सामने था, और पीछे में 10-12 किलोमीटर दूर में जो हिंदुओं के ऊपर रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर मुस्लिम लोगों का जो अटैक, इसमें हम लोग के पास एकदम सामने जो आते हैं कि एपिसमेंट का पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रहे हैं। सामने पंचायत इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, उसका वोट मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। मुस्लिम वोट को एक साथ के लिए पूरा प्री प्लान्ड है, और धरना मंच से उन्होंने जैसा कहा था कि रमजान महीनों में जो ये संप्रदाय का लोग कुछ बुरा काम नहीं करते हैं, उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन खुद ही उन्होंने एक 30% का ऊपर हाथ डाल दिया। और हम लोग देखे हैं कि कितना रमजान महीना में कितना बुरे काम ये लोग नहीं करते हैं। उसका हम लोग वीडियो फुटेज जो विजुअल हमारे पास आए हैं, हम लोग वो देखे हैं कि कैसे तरीके से हावड़ा के शिवपुर में जो पत्थर फेंके हैं रामनवमी का शोभा यात्रा में, और कल भी मस्जिद के नीचे से जब शोभा यात्रा जा रहे थे, ऊपर से पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर वहाँ पे मारा था, फेंका था, और उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट और मेदिनीपुर का सांसद दिलीप घोष जी उपस्थित थे, वो भी इंजर्ड हुआ, और विधायक विमान घोष, पुरछुरा का विधायक विमान घोष उपस्थित थे। बहुत सारा हिंदू बच्चा, महिला, सब लोग एक साथ उपस्थित थे, और वहाँ पे ऐसा हो गया था कि उसके बाद पुलिस एकदम पूरा दर्शक होके सब कुछ देख रहे थे, और कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद हिंदुओं के घर में जाके
तलवार लेके, मुसलमान संप्रदाय के लोग तलवार लेके गया और घर घर से हिंदुओं को बाहर किया। जो शोभा यात्रा में शामिल हुआ था उसको बाहर करके मारा पीटा और पावर कट भी कर दिया था। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब 2 दिन पहले रामनवमी के जो शोभा यात्रा में जो हावड़ा में जो घटना घटी थी, उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने क्यों प्रोटेक्शन, पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दिया? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि एपिसमेंट पॉलिटिक्स बंगाल में चल रहा है और हिंदुओं का वोट भी, जब 3rd टाइम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ तो मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट, बंगाल का हिंदू लोग भी वोट उनको दिया था। लेकिन उनको सिर्फ देखना है कि रमजान के लिए उसको देखना है। लेकिन हम लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग भी 9 दिन उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और रामनवमी का बड़ा पूजा करते हैं। रामनवमी नवरात्रि उसको देखना नहीं है। 1 महीना के रमजान का जो रोजा चलते हैं उसको ही सिर्फ उसको देखना है। और अभिषेक बनर्जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि बार बार क्यों रामनवमी के ऊपर होता है? क्योंकि हम सिर्फ रामनवमी नहीं, रामनवमी, दुर्गा पूजा विसर्जन, सरस्वती पूजा बंद करना, ये सब पश्चिम बंगाल में दिखाई देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोगों का ताजिया निकाले, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बार बार रामनवमी के लेके शोभा जाते हैं, ये शोभा नहीं देते हैं हिंदू को। आप लोग घर में बैठ के पूजा कीजिए, घर में अंदर में रहिए, आपको बाहर नहीं जाना है। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग खतरे में हैं। अभी अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो दिखाया था वो सोशल मीडिया में कि कोई हिंदू लोग रिवॉल्वर लेके जाते हैं। अभी बीजेपी का VHP ने एक वीडियो अभी ट्वीट किए हैं और उसमें जो दिखा दिया है कि VHP ने कि वो जो अभिषेक बनर्जी जो वीडियो बाहर में किए थे, वो जो वीडियो ट्वीट किया वो पूरा फेक है और ही इज मलाइनिंग हिंदूज एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर डिवाइड पीपल ऑन रिलीजियस लाइन। ये बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है और हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ है, बंगाल के साथ है और बंगाल के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी लेंगे। और पूरा देश को हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि पूरा देश देखे, जैसे देश पूरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी इसको लेके, विकास को लेके जो नरेंद्र मोदी जी का सामने जो देश आगे जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी जैसा पुराना कश्मीर जैसा, पुराना कश्मीर में भी हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान का झंडा उड़ते थे, पुराना कश्मीर में पत्थरबाजी होता था। अभी पुराना कश्मीर पाकिस्तान जैसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हुआ, पूरा देश देखे और हम लोग पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदुओं के लिए हम लोग खड़े हैं। उसके लिए हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और ममता बनर्जी जो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग NIA इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर ममता बनर्जी शुड रिजाइन। आदरणीय सांसद सुश्री देबासी चौधरी जी से आग्रह है कि आप संबोधित करें। नमस्कार। पिछले रामनवमी का पहले दिन से, मतलब 29 से इस्लामपुर, जहां इस समय पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा रैली होते हैं रामनवमी का, पहले वो देश का दूसरा स्थान में था, अभी पहला नंबर हो गया है, जहाँ पे हर साल 3 लाख का आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, रामनवमी का जुलूस में भाग लेते हैं, जो मेरा क्षेत्रों में आते हैं। और मैं क्षेत्रों में पहुँचने का साथ साथ वहाँ का परिस्थिति इतना जटिल हो गया था। कुछ हिंदू लोगों का जो पहले अरेंजमेंट में बिजी रहे हैं, मस्जिद से आके उनका ऊपर पत्थरबाजी किए हैं, इनका 25 बाइक जलाया है और
साथ में जब मैं प्रशासन को दृष्टि आकर्षण किए हैं, उस समय से लगातार हिंदुओं का ऊपर आरोप जारी किया है इन्होंने। अभी 25 बाइक का क्या होगा, इनका तरफ के विचार क्या होगा, उस कुछ नहीं देखा है। और दूसरा दिन रामनवमी का दिन डालखोला, जो मेरा क्षेत्र में ही आते हैं, उसमें पुलिस का इंस्ट्रक्शन से, जबकि मैं कल परसों में एसपी सर से मिला था इस्लामपुर के, तो उन्होंने बोला है कि जो ट्रेडिशनल रूट था जुलूस का वो चेंज किया गया है। इसका कारण इतना हादसा हुआ है, इतना प्रॉब्लम हुआ है। जब हमकी खबर मिले है कि पुलिस का इंस्ट्रक्शन से रूट बदला गया था और ऊपर से आरोप लगा रहे हैं जो अरेंज किए हैं उनका ऊपर, तो मेरा मतलब है एक तरफ ममता जी हिंदू को मन रखने के लिए इनका एमएलए को हर जुलूस में भेज रहे हैं रामनवमी में, और दूसरा तरफ मुसलमान को खुशी करने के लिए प्रशासन से जो हिंदू रामनवमी जुलूस में भाग लिया है उनको अरेस्ट करा रहे हैं। मेरा क्षेत्र डालखोला में अभी 120 लोगों को इन्होंने एफआईआर में डाल दिया, जबकि घर घर से जहाँ के कोई लोग भाग भी नहीं लिया है उनको उठा रहे हैं और इनका ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये पोजीशन पश्चिम बांग्ला में है, रिसरा में है, शिवपुर में है, सभी जगह में हमारे सचिव है विमान घोष और हमारी केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, दोनों का जुलूस में हमला हुए है। सभी जगह में परिस्थिति ऐसा है, ममता बनर्जी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही खतरनाक करना चाह रही है, जबकि सबको पता हो रहा है कि ममता बनर्जी जो अभी इनका सरकार पूरा टोटल जो करप्शन के विषय में फंस गई है, तब दृष्टि घुमाने के लिए ऐसा दूसरा एक महल बनाना चाहती है जाकि इनका दृष्टि डाइवर्ट हो जाए है। पंचायत चुनाव का पहले जो पंचायत लेवल का करप्शन, एजुकेशन में जो एसएससी का करप्शन, टीचर नियोग में करप्शन, वो दृष्टि घुमाने के लिए ऐसा गंदा वो आश्रय ले लिया है जो बहुत ही पश्चिम बांग्ला के लिए बहुत ही खतरनाक बन रहे। ये हम लोगों को आपका माध्यम से जानकारी देना था, पश्चिम बांग्ला राजनीति में, पश्चिम बांग्ला सरकार में क्या चल रहे हैं, कितना घटियापन राजनीति चल रहे है, वो आपको आपका माध्यम से पूरा देश को हम लोग अवगत करना चाहते हैं। आदरणीय सांसद श्री खगन मुर्मू जी से आग्रह है कि प्रेस को संबोधित करें। नमस्कार। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के बारे में जो जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं, 2014 से आप देख रहे हैं हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को, जो लोग पिछड़े वर्ग जहाँ पे है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन या सिख, ईसाई, जो भी हो, सबको केंद्र सरकार का सुविधा मिले। इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश के लिए, देश के भलाई के लिए, जनता के लिए जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन बंगाल में इसको लागू होने नहीं दे रहा है। बंगाल में आपको मालूम है जे आज 11 साल हो गया, ये तीसरी बार हमारे बंगाल में ममता बनर्जी सीएम, वहाँ पे एक्चुअली सीएम बना। तो आप देख रहे हैं जो बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में एक्चुअली वहाँ पे पूरा जंगल राज इसको लागू कर रहा है। जंगल राज को सबसे ज़्यादा वहाँ पे हर जगह में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाह रहे हैं, जो ताकि हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज संकल्प, इसको वहाँ पे एक्चुअली सभी जनता के पास, सभी वर्ग के पास
पे नहीं जाए। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपन को ऐसे सबको सामने वो ऐसे बोलना कोशिश कर रहा है कि मैं मुस्लिम को है, मैं मुस्लिम के लिए मैं खड़ा हूँ। एक्चुअली मुस्लिम को मैं मदद देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। वो 30% को वो बोल रहा है, लेकिन अब बंगाल में आप देखेंगे तो किसी को भी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं पहुँचा रहा है। मुस्लिम का क्या सुविधा है वहाँ पे, मुस्लिम का क्या इसमें जो हमारे सरकार, केंद्रीय सरकार को जो केंद्र सरकार से जो भी हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, मुस्लिम को मिल रहा है क्या? उन्होंने जो भी इलेक्शन के समय में जो भी बोल रहा, इलेक्शन में बोला जे मुस्लिम का ये मदरसा बनाऊंगा, मुस्लिम का सबसे ज़्यादा सुविधा मिलवाऊंगा। तो आप देखिए मुस्लिम लोग क्यों धरना में बैठे हैं, क्यों वहाँ के मदरसा का जो शिक्षा के लिए टीचर धरना कर रहे हैं। अब अभी देखिए जो वहाँ पे ग्रुप डी जिसमें 7,000 का नौकरी होना चाहिए था, तो आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो अभी भी 224 दिन भी अभी वो लोग धरना में थी। 224 दिन और उनको और इंसाफ के लिए वो लोग बोल रहा था। आज वो लोग वहाँ पे आज जुलूस निकाला, उसको रोक रहा है। तो यही है बंगाल की स्थिति। आप देखिए जो हमारे जुलूस जब ये रामनवमी में शुरू हुआ था, रामनवमी के बारे में आदरणीय देवश्री जी का कही हैं, फिर हमारे लकेट जी बताइए आप लोग को। तो रामनवमी के जुलूस में क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ? एक्चुअली ममता बनर्जी का अभी वो जो जैसे सोच रहा है, वो जैसे करने चाह रहा है, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है हर जगह में। आप देखिए जो सागरदिघी का जो उपनिर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, वहाँ हार गई हूँ। मुस्लिम लोग उससे दूसरा जगह में वोट अपना जो वोट डाला है, इसीलिए उनको दिमाग खराब हो गया। अब बख्तुई में क्या हुआ, वहाँ पे जो घटना घटी आपको सबको मालूम है। इसलिए ममता बनर्जी अभी कोशिश कर रहा है वहाँ पे डिवाइडिंग रूल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे पूरा बंगाल में जो जंगल राज, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लागू करना चाह रहा है। यही है हमारे एक्चुअली रामनवमी का जुलूस में जो इतना हमला हुआ। आप देख रहे हैं रिश्रा में क्या हो रहा। हमारे आदरणीय सचिव वहाँ का एक्चुअली राज सचिव और बीजेपी का और विधायक उनका ऊपर हमला हुआ, वो पत्थर मारा है उनको। अभी भी हॉस्पिटल में हैं, अभी भी वो एक्चुअली हॉस्पिटल में वहाँ पे अभी भी हैं। तो ऐसे बंगाल में चल रहा है, ये बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसलिए जनता से हम जरूर बीजेपी के ओर से हम लोग जनता तक हम पहुँचेंगे। ये बंद होना चाहिए बंगाल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय सांसद श्री जगन्नाथ सरकार जी से आग्रह है कि आप संबोधित करें। सभी को नमस्कार। देखिए बंगाल में ये टीएमसी का एक लुटेरा राज चला रहा है। ये लूटने के लिए वोट बैंकिंग पॉलिसी लागू कर दिया। एक तो 100% माइनॉरिटी वाला को टीएमसी में शामिल करना चाहिए। उसके बाद हिंदुओं के बीच 15 से 20% लाभार्थी बनाकर उनका वोट बैंक चालू हो जाएगा। तो इसी बारे में डिवाइड एंड पॉलिसी लगाकर सारी बंगाल में वो स्थायी एक राज, लुटेरा का राज बना रहा है। लेकिन इसलिए यो हिंदू इकट्ठा हो सकते किस नाम पर? राम नाम पर। इतना पवित्र है। देखिए अभी जो खत्म हुआ जो शक्ति की आराधना पूजा का, दुर्गा पूजा का, वो बासंती पूजा बोलते हैं, उसी पूजा
अकाल में शरद काल में राम ने किया, इसलिए बंगाली आदमी राम के इतना प्यारा है राम, इसलिए वो जो गलत टाइम में पूजा किया उसी उत्सव सबसे बड़ा है। इसलिए राम नाम रखने के लिए पहले कौन बंद किया? वो काजी राज चलता था जिस टाइम, वो चांद काजी, वो बोला ये हिंदुस्तान में राम नाम नहीं चलेगा, बंगाल में राम नाम नहीं चलेगा, कृष्ण नाम नहीं चलेगा। उसी टाइम चैतन्य युग अवतार भगवान किसान जी का अवतार है, कली युग का, वो पैदा हुआ। इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन सृष्टि करके खुद चांद काजी के घेराव कर लिया। उसके बाद वो स्वयं भगवान का जो अवतार है वो सुदर्शन का आह्वान किया। चांद काजी डर गया, उनका पैदल पर पढ़ के वो खुद भी वैष्णव बन गया। परिवर्तन सभी पहले चैतन्य ने किया, मूवमेंट कैसे बनता है चैतन्य ने किया। इसलिए ममता ने वो राम नाम बंद करने के लिए वो बोलता है गाली है राम नाम, ये पवित्र नाम। वहाँ बंगाल का आदमी का क्या सोच है? एक बार राम लेने के बाद जितना पाप स्थलित होते जाते हैं, खत्म होता है, और आदमी का संभव नहीं सारी लाइफ में इतना पाप करे। ये नाम इतना पवित्र है राम नाम, तो इसलिए राम नाम लेकर इकट्ठा हो रहा है, वो कोई निषेधाज्ञा नहीं मानता है। इसलिए ममता ने इस बार पहले ही बोल दिया राम नाम के नहीं, मैं रोकेंगे नहीं। वो पूरा समाज वोट बैंक वो टूट रहा है, मुस्लिम लोग, वो तो सागरदिघी में रिजल्ट आने के बाद पता आ गया। इसलिए एक साथ जोड़ने के लिए वो फ्री हैंड दे दिए, जो आप लूट लो, दुकान पर दंगा करो, जो खुशी आप कर सकते, आप कुछ नहीं होगा। वो सारी ये गंदा काम के लिए हिंदू के मैं जिम्मेदारी करेंगे, पहले वो बोल दिया। इसलिए ये काम हो रहा है, ये साजिश है, देश के साथ जुड़ा है, देश के खिलाफ, देश विरोधी खिलाफ जो आदमी बांग्लादेश बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जमात इस्लाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ जितना बंगाल में विस्फोट सारी जितने दंगा हुआ, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सारी प्लान माफिक हो रहा है। इसलिए इसके जिम्मेदार ममता ने है, और इसलिए पहले ही विबृति दी दिया। वो मैं बोल रहा, इसलिए वहाँ NIA तदंत तो होना चाहिए। अभी एक आदमी को पकड़ गया, उनका नौकरी दिया TMC ने, वो गवर्नमेंट ममता के दफ्तर में ही दे दिया। तो उसके बाद पूरा इंक्वायरी हो तो सारी TMC किसके साथ कौन जुड़ा है वो फंस जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट चुनाव में, पंचायत चुनाव हो, जितने चुनाव हो, बूथ दखल के लिए उनका पैसा डालेंगे। आपका पास आपका वो छवि मेरा पास CCTV का है, आप ये लूटने वाला काम नहीं करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। इसलिए मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर वो वोट लूटने का काम करते हैं, इसी के निर्भर करके वो चुनाव जीतते हैं, दंगा फैल लेता है। ये सब साजिश है, प्लान माफिक है, इसलिए पूरा जिम्मेदार ममता है। इसलिए इंक्वायरी होना चाहिए, 356 लगाना चाहिए, तब बंगाल बचेगा नहीं। वो ममता का मनसा है, हम तो मोदी के लिए सारी हिंदुस्तान का PM कभी नहीं बन सकते, क्यों नहीं। वो ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का साथ मिस जाएगा तो बांग्लादेश का मैं PM बन सकते, इसके लिए उनका मनसा है PM बनने के लिए। इसलिए इनका इंक्वायरी होना चाहिए जितना जल्दी हो। सेंट्रल के पास मेरा मांग है, ये इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद जितना इसके साथ जुड़ा हुआ उसका पनिशमेंट दीजिए। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकता है। ये हम लोगों के पास फुटेज भी है, कल जो रिश्रा में घटना घटी थी पश्चिम बंगाल में, जो श्रीरामपुर के रिश्रा में, आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुओं लोग का ऐसे करके मारे हैं, ऐसे करके पीटे हैं।
रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde who has been present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press conference that was called in by Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, clearly condemning the statement of Rahul Gandhi, and there they have announced that there will be a Savarkar Gaurav Yatra across Maharashtra. So it has been started from today. It will go on till 8th of April. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. Madam, he's been arrested. Because it was a case, I believe that was closed by the police itself. They're trying to stop us. NIA की टीम बाजे को लेकर यहाँ पहुंची है। News that's just coming in, no respite for the former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, whose judicial custody has now been extended for 14 more days till 17th of April. So no respite for Manish Sisodia in Liquor Gate case, as his custody has now been extended by 14 more days by the Delhi's Rouse Avenue Court. We'll try and go across to Sambhav as well to get us more details, but that's another setback that's just coming in for Manish Sisodia, whose judicial custody has now been extended till 17th of April. So Delhi's former Deputy Chief Minister, who was brought to the Rouse Avenue Court just a short while back, and latest, of course, update coming in that his judicial custody has been extended. This after CBI moved in an application seeking extension of his judicial custody, saying that the investigation is at a very crucial stage. Now remember, just to put this into context, Delhi court a few days back had rejected Manish Sisodia's bail plea, saying, in fact, prima facie, the court had observed that prima facie it appears that Manish Sisodia is the architect of this whole Liquor-gate scam, which happened, the now scrapped liquor policy of the Delhi government. Latest, of course, coming in, Manish Sisodia's judicial custody that has now been extended till 17th of April. Meanwhile, Manish Sisodia's counsel has maintained that his keeping Manish Sisodia in custody will not serve any fruitful purpose, whereas remember the court very categorically, mincing the words, had stated, in fact had observed that prima facie it appears that Manish Sisodia was the architect of this liquor policy that has now been scrapped by the Delhi government. He was produced before the Delhi's Rouse Avenue court a short while back, and the court there extending his judicial custody till 17th of April. Remember, he's been in CBI's custody for a week now following his arrest in the Delhi's liquor policy case. He's now been sent into further judicial custody till 17th of April. We slip into a very short break for now, but top stories to continue after this very short break. जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है। Prime Minister hits out at opposition, says dynasty and corruption go hand in hand. And it's a massive storm over insult to India's freedom icon. Savarkar demand grows for Rahul Gandhi's apology.
11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. Authority. He's been arrested. Because it was a case, I believe, that was closed by the police itself. They're trying to stop us. एनआईए की टीम बाजे को लेकर यहाँ पहुंची है क्योंकि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे इसी 200 to 300 supporters are gathered here at Hooghly. They're trying to stop. Today the whole nation is looking at you. What exactly are your thoughts? Why must you bring this? रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced. A 13-second video of a dangerous bike stunt performed by a man with 2 women has gone viral. This video prompted the Mumbai police to slap a case against the 3. Watch how a man is seen performing a wheelie with 1 woman sitting in front of him and another sitting on a pillion. The man is seen lifting the front wheels of the road and riding on for several meters as the 2 women straddle him. The woman sitting in front of the biker is waving, smiling and showing off gang signs mid-stunt. Neither of the 3 passengers had helmets on. The biker has been arrested by the cops. The police are still looking for the 2 girls in the video who are the co-accused. Bureau Report, Republic TV. Malegaon. This case, 33rd witness has turned hostile. And slipping into a very short break, coming up on the other side, the latest from Bihar, where mega face-off has erupted in Bihar Assembly as Nalanda and Sasaram violence. रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde who has been present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press conference that was called in by Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis clearly condemning the statement of Rahul Gandhi, and there they have announced that there will be a Savarkar Gaurav Yatra across Maharashtra. So it has been started from today. It will go on till 8th of April. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. Authority. He's been arrested. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. Authority. He's been arrested.
चूंकि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे, इसी नतीजे 200 to 300 supporters are gathered here at Hooghly. They're trying to stop. Today the whole nation is looking at you. What exactly are your thoughts? Why must भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है। Prime Minister Modi hits out at the opposition, says dynasty and corruption goes hand in hand. Storm over insult to India's freedom icon Savarkar, demands grows for Rahul Gandhi's apology. Even ally NCP dumps the Congress over Savarkar insult. CPI now comes to support. Mega face-off in Bihar Assembly as the Nalanda and Sasaram violence becomes the top focus. Fresh violence in West Bengal's Hooghly, Section 144 in force, internet services suspended. And all-out chaos in Vadra, Congress as cadres fight for tickets in battleground Karnataka. Hello, welcome. You're watching the Republic TV with me, Rakshita Mishra, and live and breaking news coming in at this point in time. And this regarding the Malegaon blast case. The 33rd witness has now turned hostile before the court. Big development coming in on the Malegaon blast case. A witness who appeared before the court has said that he was tortured and kept under illegal custody for 7 days by the ATS. After his deposition, a special NIA court judge declared him hostile. This is the 33rd witness in the 2006 Malegaon blast case that has turned hostile. Remember, it was just earlier this month another witness was declared hostile after he did not support the prosecution's case. And my colleague Alisha is joining us live from our Mumbai newsroom. Alisha, this is another big development that is coming in and day out we are seeing that witnesses are turning hostile in the Malegaon blast case. Well, yes, in the entire trial of Malegaon bomb blast case 2008, where 302 witness has given the deposition before the special NI court. But today it's a 33rd witness who has turned hostile, and before the court, where the witness has clearly mentioned that he was kept under illegal detention and in illegal custody, and he was tortured for 7 days. After hearing his deposition, where the court has declared him hostile, even earlier we heard that the other witnesses who has turned hostile are given the same of the deposition before the court, clearly mentioning whether the fact they have never recorded the statement before the ATS or whether they were kept under illegal detention for 7 days and they were tortured, they were beaten up. Some of those claim that has been made by the witnesses before the court, after which they were turned hostile. So today even we are seeing that the witness who was called in, his statement that has been already recorded under section 161 of the CRPC, that has been produced by the NIA before the court, and clearly the witness has said that he has never recorded the statement, but in fact he was kept under illegal custody for 7 days. He was tortured. So this has something the court has taken on record, and after his deposition, where the court has declared him hostile. Right, of course, a big allegation that we are seeing, Alisha, here, and we are seeing that earlier this month also another witness was declared hostile, and the witness too did not support the prosecution's case.
Well, yes, in the last week we have been witnessing this is the third witness who has turned hostile, and most of them has given the same statement that they have never recorded statement by the ATS. In fact, ATS has put them under illegal custody. They were tortured, and those people were under custody for 7 days. That was an illegal custody, and even today it was an important witness that has been produced before the court. Whether the fact where now the NI has been looking into the matter. They have been investigating the case, and NI has produced the same statement that has been mentioned in the charge sheet that was filed by the investigating agency, that was ATS, Maharashtra ATS, who was looking into this. And the witness has clearly stated that he has never recorded his statement, but he was kept under illegal custody for 7 days. He was tortured by ATS for some of the reason. There were not more disclosure that has been taken before the court, and the witness has just mentioned that he has never recorded statement under CRPC 161 and 164. But today we're looking into his deposition right after his statement has been recorded before the court, where the court has turned the witness as hostile, and he has been declared hostile now. And we have to say, because more than 300 witness has already been recorded their statement before the special NI court. Absolutely. Well, thank you so much, Alicia, for joining us with all those details and updates on that big development that we are seeing in 2006 Malegaon blast case. Viewers, this is live and breaking on Republic TV. The latest development on this case is that another witness has turned hostile. He has in fact alleged that he was tortured and kept in custody for 7 days, and alleging torture by the ATS in this case. Office on Queen's Road, where hundreds of Congress protesters have gathered out in large numbers demanding a ticket for HM Gopi Krishna from the Tarikere Assembly constituency as well. And you can see that now the police too have come in and cordoned off this entire sphere as well. But now you can see the supporters of HM Gopi Krishna stating that he should be given a ticket from the Tarikere Assembly constituency as well. And meanwhile, the KPCC working president Salim Ahmed, who spoke some time ago, stated that there is still a lot of confusion because of the fact that there were many ticket aspirants as well. So it's a total chaos outside the KPCC office. But meanwhile, we can also see that a huge number of police have also been deployed to make sure that there will be no sort of untoward incident that will be reported. And all these leaders are going ahead and waiting for the KPCC president DK Shivkumar to arrive here, along with the leader of opposition Siddaramaiah too, who will go ahead and address their grievances, is what these Congress workers believe. With video journalist Bhagat Prajwal Prasad reporting for Republic, Bengaluru. After the Bihar Assembly session was adjourned, BJP MLAs protest against the state government outside the state assembly over the violence that occurred during Ram Navami in various districts of the state. Chhattisgarh Chief Minister and Congress leader Bhupesh Baghel will accompany Rahul Gandhi to Surat. Chhattisgarh CM stated that he will travel with his leader Rahul Gandhi to Surat. Bulldozers deployed by the Indore Municipal Corporation demolished illegal construction at the Beleshwar Jhulelal Mahadev temple today. This comes after 36 people were killed after its floor caved into a stepwell. District administration officials and police personnel were present in strength as bulldozers rolled in. Assam police recovered 50 packets containing 5 lakh yaba tablets from a consignment at Silchar. According to the police, 2 drug peddlers were also apprehended during the operation. The Enforcement Directorate is carrying out searches across 9 locations in Pune in connection with the sugar mill corruption case. 2 businessmen based in Pune were searched for having links with the MVA leader Hassan Mushrif.
Fumes still coming out from AR towers in Bansmandi area of Kanpur that was caught in a massive fire 4 days ago. According to police officials, the fire inside the shops is being extinguished and by evening it will be completely brought under control. Notably, on the 31st of March, a massive blaze erupted in the AR towers near Hamraj Market, in which over 500 shops were gutted, leading to a loss of about 100 crore rupees. The Dakshina Kannada district administration has heightened vigil at the border points with Kerala to prevent flow of money and freebies to Karnataka ahead of the assembly elections next month. Dakshina Kannada Deputy Commissioner M.R. Ravikumar on Sunday said that 10 checkposts have been set up at the interstate border points with Kerala. In all, 27 checkpoints have been set up in Dakshin Kannada, including inter-district and local checkposts. Leader of opposition and former Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will arrive in New Delhi today to meet AICC leaders ahead of release of second list. According to sources, the second list of Congress will be released after CEC meet. Congress ticket aspirants and cadres staged a massive fight outside KPCC office. According to sources, the Congress workers threatened to consume poison if tickets are not given to their candidate. Lot of demand is there for tickets. Lot of competition is there. We are not yet finalized. Tomorrow is the CEC meeting. In that we are going to discuss and finalize. And we are getting a survey report. And who's the best will get the ticket. No factor. There's a competition. In the one constituency, 3-4 candidates are there. Definitely they feel that they would get a ticket. We definitely all this will be sorted out. Nothing to worry. Meanwhile, KPCC President and MP from Kannur writes to Union Ministers for Railway Ashwini Vaishnav seeking his intervention into the matter and asking to give compensation for the victims who were set ablaze on a train, including those who died in the incident. All right, time for a short break, but lots more on the other side. Even as ally NCP dumps Congress over Savarkar insult, CPI has now come to its support. And fresh violence in West Bengal's Hooghly, Section 144 in force, internet services suspended. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Has been arrested right now. That's Chidambaram right now. He's been arrested. Because it was a case, I believe that was closed by the police itself. They're trying to stop us. NIA की टीम बाजे को लेकर यहाँ पहुंची है क्योंकि एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए गए थे इसी 200 to 300 supporters are gathered here at Hooghly. They're trying to stop. Today the whole nation is looking at you. What exactly are your thoughts? Why must रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde who is being present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press the BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde who is being present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press conference that was called in by Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis clearly condemning the statement of Rahul Gandhi, and there they have announced that there will be a Savarkar Gaurav Yatra across Maharashtra. So it has been started from today. It will go on till 8th of April.
Welcome back. The political face-off over Rahul Gandhi's Savarkar insult continues, and Union Minister Bhagwat Karad has now hit out at Rahul Gandhi. Let's listen in. वीदा सावरकर जी जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनके सम्मान में, उनके गौरव में आज यात्रा निकली है। ये यात्रा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने आदेश दिया। उसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 288 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा है। वीदा सावरकर जी का अपमान कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी बार बार करते हैं। वो कहते हैं मैं गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन वीदा सावरकर जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनको काली पानी की सजा हुई थी, उतना ही नहीं तो अंधेरे कोठरी में उनको सजा हुई थी। शरद पवार का इसी बीच जो है एक स्टेटमेंट सामने आया है। शरद पवार कह रहे हैं कि उनका बलिदान जो है भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन शरद पवार जी महाविकास आघाड़ी के ज्येष्ठ नेता है, तो शरद पवार जी ने ये राहुल गांधी को समझाना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता होते भी तो एक उनकी महाविकास आघाड़ी है, और महाराष्ट्र में आने के बाद ऐसे वक्तव्य उन्होंने नहीं करना चाहिए। उतना ही नहीं तो उद्धव जी ठाकरे जो बाला साहब के जो चिरंजीव है, उनको भी समझाना चाहिए। इस प्रकार से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई थी राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद। आपको लगता है कि ये बचाव की प्रक्रिया एक राजनीतिक स्टेटमेंट है सेटल ऑन होने के लिए? वो वैसा ही लगता है। शरद पवार जी बहुत होशियार और एक्सपीरियंस नेता है, और ये राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकता है अगर उनको सही दिल। तो हमने तो आह्वान किया था कि उन लोगों के नेता ने इधर आना और सावरकर जी का अभिवादन करना। But the CPM has now come to Rahul Gandhi's defense, saying that the opposition must stand united. NCP chief Sharad Pawar has come forward and said that there is no point in, castigating or chiding Savarkar because he has done a lot and we cannot ignore his sacrifices. How do you react? Because the Congress is stern. They say that they do not believe in Savarkar and their stand is firm. What do you say? My first reaction is that there is no point now to make it a big issue. On Savarkar, various political streams, political parties and political leaders have the right to keep their own opinion. I have my own opinion. My party has. Savarkar cannot be treated as a patriot as far as we are concerned. And we are really shameful that Savarkar, had a history of writing a letter of pardon to the British colonial masters. And I have read those letters. The language was so shameful for the country. So in that way, we believe that Savarkar is not a person to be highlighted as a great hero. We, the Communist Party, sincerely believe that to make the issue as a big issue now is not politically needed now. Now the needful is that all those political forces who are trying to come together to save democracy, they should unite together and march forward. In that onward march, bringing in Savarkar issue as a big issue will be only helping the interests of the Sangh Parivar. We don't share that view. That was the CPI's reaction. But days after Sharad Pawar's comment, Congress has now hit back, saying that the NCP is allowed to have its own ideology, but the Congress party will stick to its perspective. See, what Sharad Pawar ji has said, it's correct in his own way, but we are also correct in our own ways. And one thing is this, that Savarkar was not for Gau Seva. He said that cow is a cattle, cow is an animal. It should not be equated with the humans. There I find that he is scientific. He has a scientific approach towards this. But this is also fact that he tendered apology many times. This is also fact that he drew salary and pension from the British government. So
this also cannot be denied. And whatever the stand Sharad Pawar ji is holding, of course, it's his choice to hold that. But the fact is this. जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है. To hits out that the opposition says dynasty and corruption goes hand in hand. All out chaos in Vadra. Congress has cadres fight for tickets in battleground Karnataka. रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। The BJP Shiv Sena Savarkar Gaurav Yatra has already been commenced, and we can see the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde who has been present in the same yatra, and this is against the statement of Rahul Gandhi. We remember in the last press conference where Rahul Gandhi has stated that he is Gandhi and not Savarkar, and Gandhi never apologized. Right after which we saw there was a press conference that was called in by Chief Minister Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis clearly condemning the statement of Rahul Gandhi, and there they have announced that there will be a Savarkar Gaurav Yatra across Maharashtra. So it has been started from today. It will go on till 8th of April. Troubled with the words that they've used, Mr. Mamata? Something. Are you troubled with the words? I'm asking. And that is Christian Michel. First visuals on your scene. Christian, would you want to speak? Christian, would you give facts to India? Chidambaram has been arrested right now. That's me, Chidambaram, right now. He's been arrested. रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद नालंदा जिले में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हमारे साथ ये देखिए ये महिला बटालियन है जो कि मार्च कर रही है। बिल्कुल कर्फ्यू सा नजारा है। देख सकते हैं कि आसपास के जो दुकान हैं सभी बंद हैं। स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक के मौत के बाद 2 लोग जख्मी हुए हैं। 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धारा 144 पूरे नालंदा जिले में लगा हुआ है। In some breaking news from Kerala, this coming from Kozhikode, where in a shocking incident, 8 people have been injured after an unidentified man poured petrol and set on fire one of them allegedly after an argument on board an express train near Ilathur in Kozhikode district on Sunday night. You can see the video on your screens. According to railway sources, the incident took place at around 10 p.m. and the suspected man, who is yet to be identified, escaped after passengers pulled the emergency chain. And reportedly, there was an argument during which a man poured petrol and set on fire one of his co-passengers. Shocker coming in from Kerala. Investigation agencies are suspecting a larger conspiracy in the incident, and police say the perpetrator did not target a single person, and the person left the spot in a two-wheeler. My colleague Varshini is joining us on the broadcast for more on this. What more details can you tell us, Varshini, on this story? Well, Rakshita, if you see, the investigation is currently ongoing. The Kerala police are currently investigating from the crime scene, as well as using the CCTV footages from the nearby places where it has been installed near the railway station, and also in and around the bridge where this incident also took place. And as far as we are given to know, inside sources from the police, Kerala police tell us that the Kerala DGP is also currently in Kannur, and is also currently discussing with the senior police officials in order to how to take this case forward, because of the bigger conspiracy that could be at the behind of this incident is what is being speculated right now. Just for that, the Kerala DGP along with the higher officials in the police department are currently discussing on to how to move forward with this. As we've also been seeing, there are also CCTV footages that are also coming out where we can see a man who's
also the alleged suspect is what the police is suspecting, and also the railway police have come up with a drawing, a picture, and they've released it so that any public with any information regarding a person looking similar to this can come up to them. Therefore, the hunt for this particular person who did this is underway right now as we speak. The police are trying their maximum to find out who this person is, and only from then on they can find the real motive behind this entire crime that has taken place in Kerala. Right, viewers, let us tell you that 3 dead bodies were later found on the tracks near the railway station, and forensic team is collecting more details, and that's all we have on this story. Thank you so much, Varshini, for joining us on the broadcast for those details. And right now it's time for a short break. Lots more coming in on the other side. Prime Minister has hit out at the opposition, saying that dynasty and corruption goes hand in hand. And storm continues over insult to India's freedom icon Savarkar. Demand grows for Rahul Gandhi's apology. Lots more on the other side. Stay tuned to Republic TV. 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals.